कर दीजिए। हेलो हेलो यस टेस्ट हेलो ये बंद करो ना। हाँ यस कर दीजिए बंद। Okay. 3 times the measure of an angle is the measure of its supplement. Which equation expresses the statement? Expresses the statement. ठीक है? If the measure of an angle is if the measure of an angle is x. Option A 2x equal to 180. Option B 4x equal to 180. Option C 3x equal to 180. And option D none of this. बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? अभी क्या बोला है? व्हाट इज बीन सेड हियर? 3 times the measure of an angle is the measure of its supplement. इसका मतलब क्या हो गया? What do you mean by this? 3 times the measure of its angle is equal to its supplement. मतलब if one of the angle, अगर एक एंगल x है तो another angle कितना हो गया हमारा? 3x. And we know that कि दोनों supplement, when you add up the, what do you mean by supplement? Supplement means a summation of two angles. The sum of two angles is 180 degree. So that is 3x plus x is equal to 180. So that is 4x equal to 180. So the correct answer is B. Okay, everyone got this? Okay. Next, question number 2. अब क्वेश्चन नंबर 2 में ओके ठीक है, विल स्टार्ट. So यहाँ पर what is the question? The question is you have the diagram हमने बनाया है यहाँ पर. Now यहाँ पर there are two regular hexagon. Now आप सबको पता है ना what do you mean regular hexagon? So regular hexagon मतलब जहाँ पर दो सारे sides equal होते हैं. So in a regular hexagon all the sides are equal. So this hexagon number 1 and hexagon number 2. So both are regular hexagon. So this is the given data. And what else has been given? So what they are asking us, what is the ratio of the smaller hexagon? हमें क्या पता करना है? Smaller hexagon upon, you have to find out the ratio of smaller hexagon to the larger one. Smaller to the larger का हमें ratio पता करना है. And what else has been given? The figure shows that, and यहाँ पर ये वाला जो part है ना, this is a rhombus. ठीक है? So what this figure contains? You have two regular hexagons. ठीक है? This is smaller one and this is the larger one. And you have a rhombus here. You have to find out the ratio of smaller upon larger. ठीक है? आपको एरिया पता करना है. What is the area of the smaller hexagon to the larger hexagon? So now options are 1:3, second 1:8, 3, 1:6, and 4. And 1:4. ठीक है? समझ में आ रहा है?
सो आपको पता क्या करना है, एरिया ऑफ द स्मॉलर टू द लार्जर हेक्सागन, एंड दिस इज अ rhombus and these two are a regular hexagon. ठीक है, टेल मी द आंसर. Anyone? You can drop in the chat box. ठीक है, so I hope everyone understood the question ना. Okay, let us solve this now. अभी देखो, अगर हम मानते हैं किसी को मिला आंसर? यहां पर देखो, व्हाट वी कैन डू, सी ये हमें दे रखा है rhombus, this is a rhombus, so in rhombus we know that all sides are equal. rhombus में हमें पता है कि सारे साइड्स इक्वल होते हैं, कि that is the property of a rhombus, that in a rhombus all four sides are equal. so अब अगर ये और ये इक्वल है, ठीक है, और हमें मतलब we know that this is a regular hexagon, this is a regular hexagon. If I am saying this is a 2 centimeter, so this is 2 centimeter, this is 2 centimeter, this is 2 centimeter, and this is a regular hexagon. So regular hexagon हो गया, मतलब ये भी इक्वल ही हो गया, 2 सेंटीमीटर हुआ ना. अंडरस्टूड और नॉट? ये बात समझ में आई सब लोग को? सी this all four sides are equal, but if you see that rhombus and smaller hexagon, one side is common in a rhombus, and in a smaller hexagon the one side, this side is common. ठीक है, so if this side and this side is equal, so definitely this and this should be equal, correct or not? If I just name it, suppose this is a A, this is a B, this is a C, and this is a D. Okay, if I say AB is equal to BD and AB is equal to BD, हमें पता है. Why? Because it is a rhombus, because of the property of rhombus. And if you have BC is equal to BD. Why BC and BD is equal? Because this is a regular hexagon. So from these two equation, what we get? AB. So from this is the second equation, and this is the first equation. So from 1 and 2 we get AB is equal to BC. Correct? So ये दोनों equal हो गया. इसका मतलब क्या हो गया? This means that B is a midpoint of AC. Correct? B is a midpoint of AC. इसका मतलब ये हो गया. Correct? So B is a midpoint of AC. So if I say this whole is X, ये पूरा X है, so इसका मतलब ये कितना हो गया? X by 2 and X by 2. Right or wrong? Because B is a midpoint to AC, तो X हो गया, तो ये X by 2 X by 2 हो गया. इसका मतलब what is this? This is X by 2, this is X by 2, this is X by 2, and this is also X by 2, and this is also X by 2. Correct? Understood or not? Now anyone can tell me what is the area of the rhombus? What is the formula for the area of the rhombus? So area of the rhombus का formula है, ठीक है, area of the rhombus का formula है 3√3 upon 2 a square. Area of the rhombus का formula क्या होगा? 3√3 upon, दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा है फॉर्मूला? 3√3 upon 2 a square. Correct? Now what do you mean by A? A मतलब side of the rhombus, sorry, side of the hexagon. So this is the formula for the area of the hexagon. ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया?
So now we can substitute the value. हमें क्या पता करना है? What we have to find out? Ratio of smaller to the larger. तो smaller का क्या हो जाएगा? Now see, if I write down here, 3 smaller के लिए 3√3/2 and a square क्या है हमारा? What is our a square? A square is x square by 4. Correct? a मतलब x square by 2 था, x by 2 का होल स्क्वायर मतलब x square by 4. वैसे डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 3√3/2 and what is our a? A is your x square. इधर 2 लिखा है, ठीक है? तो ये पूरा और ये पूरा कैंसिल हो गया. 3√3/2 कैंसिल हो गया. So what remains is x square by 4 divided by x square. So that means what is this? X square by 4 multiplied by 1 upon x square. So x square cancel. Answer is 1 upon 4. Correct? समझ में आया कि नहीं आया? Sir, I didn't understand. What you didn't got? I didn't understand how we got the area of the both of the hexagonal. First, you have to know that the area of the hexagon is this. What is the formula for the area of the hexagon? 3√3/2 a square. So this is the area of the regular hexagon. ठीक है? So this is the formula to find out the area of the regular hexagon. So this is very much clear now. Area of the regular hexagon. Yes, sir. Okay. Now see what we have been given. We have been given 2 hexagons, one larger, one smaller, and one rhombus. Now we know that in a rhombus all sides are equal. So I can write down this statement: AB is equal to BD. AB and BD are equal. Yes or no? Okay. But I know that this smaller one is a regular hexagon. So I can write down that BC and BD is also equal. Yes or no? Yes, sir. So from these two statements, what I get? AB is equal to BD and BC equal to BD. So what I get? AB is equal to BC. Yes or no? Yes, sir. So AB is equal to BC matlab AB, this one. AB is equal to BC means this is your AB and this is your BC. So AB is equal to BC. Correct? So AB is equal to BC. So what we get, if AB and BC is equal, that means B is a midpoint of AC. Correct? B is the midpoint of AC. मतलब if I take this whole as x, so this larger is also hexagon. So ये अगर x हुआ तो ये भी x, ये पूरा AC भी x हो जाएगा. This is x, and I know that B is a midpoint, so this will be x by 2. Correct? So basically larger hexagon का side x हो गया और smaller hexagon का side क्या हो गया? x by 2. Correct? पर मुझे फॉर्मूला पता था. स्मॉलर एरिया का फॉर्मूला क्या है? √3/2 a square. A square मतलब स्मॉलर का क्या हो गया? x by 2 होल स्क्वायर, x square by 4. करेक्ट? और लार्जर का क्या हो गया? 3√3/2 और a square. तो a square मतलब x square. तो सिंपलीफाई करके आई गेट आंसर 1/4. समझ में आया कि नहीं आया अभी? Yes, sir. समझ में आ गया. और किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ. सर डाउट है, आप पीछे जाओ ना. हाँ बोलो. आपने 3√3/2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 4 के नीचे क्या लिखा है ये डिनोमिनेटर? वाला पार्ट बोल रहे हो? हाँ डिनोमिनेटर. हाँ देखो हमने क्या लिखा? 3√3/2 ये स्मॉलर और एरिया ऑफ द रोम्बस का फॉर्मूला क्या है? 3√3/2 a स्क्वायर. ये फॉर्मूला है एरिया ऑफ द हेक्सागन का. हाँ. 3√3/2 a स्क्वायर ये है फॉर्मूला एरिया ऑफ द हेक्सागन. ठीक है. अभी हमारे पास दो है, एक स्मॉलर है, एक लार्जर है. सर उतना समझ में आ गया, सिर्फ नीचे जो लिखा ना डिनोमिनेटर में वो नहीं समझ. तो हमने क्या लिखा? 3√3/2. अब a के बदले हम क्या लिख सकते हैं? a के बदले स्क्वायर अपॉन 4 2 का होल स्क्वायर. a के बदले ना x by 2 होल स्क्वायर लिखेंगे ना. हाँ सर. क्योंकि स्मॉलर वन का साइड कितना आया था? x by 2 आया था. अब हाँ. लार्जर का भी क्या होगा? 3√3/2
अपॉन, और यहाँ पर क्या है हमारा साइड, क्या व्हाट इज आवर साइड, एक्स स्क्वायर, करेक्ट, समझ में आया? तो हाँ ये सर, पर नीचे 3 डिनोमिनेटर में क्यों लिखा है? तो 3 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बच गया, एक्स स्क्वायर बाय 4, है ना, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, करेक्ट। सो दिस कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर बाय 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, करेक्ट। तो यस अब रेसिप्रोकल करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कैंसिल एंड आवर आंसर इज 1 अपॉन 4, यही लिखा है। आपने नीचे 3√3 डिवाइड बाई 2 क्यों लिखा? कौन सा, किधर इधर ऊपर, हाँ ये वाला, हाँ ये तो फॉर्मूला है ना, 3√3/2 एरिया हाँ ऑफ 3√3/2 ए स्क्वायर, तो हाँ। 3√3/2 ए स्क्वायर 3√3/2, तो कैंसिल हो गया, तो ठीक आपने है। 2 बार क्यों लिखा? कौन सा 2 बार, ऊपर और नीचे? हाँ अरे भाई हमें पता क्या करना था, हमें पता क्या करना था, एरिया ऑफ स्मॉलर हेक्सागन टू द एरिया ऑफ लार्जर हेक्सागन, करेक्ट। हम्म तो ये एरिया ऑफ द स्मॉलर हेक्सागन हो गया, ये एरिया ऑफ द लार्जर हेक्सागन हो गया, तो जब हेक्सागन का फॉर्मूला हो तो पूरा ही लिखेंगे ना, हाँ पूरा ही लिखेंगे, 2 बार लिखे तो कैंसिल हो गया, समझे कि हाँ नहीं? पक्का, हाँ मिटा दे इसको, क्योंकि ऑलरेडी लिखा है पीछे हमने। हाँ सर। ओके ओके, ठीक है, विल गो टू द नेक्स्ट वन। वो स्लाइड चेंज कर, किसी को देखना था स्लाइड, वो इंग्लिश में हो जाएगा ना, हाँ पीडीएफ तो शेयर करूंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 3 gold bars of weight 780 gram, 840 gram and 960 gram are cut into smaller pieces, into small pieces, all of which have equal weight. Each piece must be as heavy as possible. Okay. If one piece is given to one person, if one piece is given to one person, how many people will get the gold pieces? Option A 70, B 35, C 25 and D 43. Is anyone with the answer? Okay. Anyone else?
देखो इसमें क्या करना है हमको, ये क्वेश्चन आपको आना भी चाहिए था, बिकॉज हमने मॉड्यूल में पहला चैप्टर कवर किया था HCF LCF वाला, तो उसी का पार्ट है ये। तो 3 gold bars of weight 780, 840, 960 are cut into a small pieces of all which have a equal weight. Each piece must be as heavy as possible. तो इसमें हम क्या करेंगे, LCM निकालेंगे और HCF निकालेंगे। सो हमें ये बात पता है, if we take out the LCM we get a very big answer, और यहाँ पर definitely we will get a smaller answer. सो हमें क्या निकालना पड़ेगा, because each possible heavy as possible मतलब that should be a smaller value out of this. So basically what we have to do, we have to find out HCF of 840, 960 and 780. हमें ये तीनों का क्या पता करना है, HCF पता करना है, करेक्ट। अब हम HCF कैसे पता करते हैं 3 नंबर्स का। इफ यू हैव अ 3 बिग नंबर्स, हाउ टू फाइंड आउट द HCF। तो बहुत सिंपल तरीका है जो हमने सीखा ऑलरेडी। हम क्या करेंगे, विच इज द लार्जेस्ट नंबर 960 माइनस नेक्स्ट लार्जेस्ट नंबर 840, ये सबट्रैक्ट कर देंगे, और फिर 840 माइनस द थर्ड नंबर 780। सो हमारा आंसर क्या आ रहा है इसमें, 960 माइनस 840 कितना होता है Sir, 120. 20, और इसका आंसर कितना आ रहा है Sir, 60. तो बेसिकली अगर हम इन दोनों का HCF निकालेंगे, सो विल गेट द HCF ऑफ दिस 3। सो 120 और 60 का HCF क्या हो जाएगा, हाईएस्ट Sir, कॉमन फैक्टर। 60. तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया हमारा 60। इज इट वेरी क्लियर। अब हमें ये पूछा है कि कितने लोगों को, तो ये 60 क्या हो गया, तो 60 क्या हो गया, जो वेट है, वेट ऑफ 1 गोल्ड पीस, मैक्सिमम जो एज हेवी एज पॉसिबल बोला है ना, सो उसका वेट कितना हो गया 60 ग्राम का एक गोल्ड पीस होगा। अब कितने लोगों को मिलेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल एड अप ऑल 3, हम तीनों को प्लस कर देंगे। सो 840, 960 और 780, तीनों को प्लस करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका, हम क्या करेंगे, वी विल एड अप 3, दैट इज 960 प्लस 840 प्लस 780, और हम किससे डिवाइड कर देंगे, अब हम किससे डिवाइड कर देंगे, विल डिवाइड इट बाय as heavy as possible 60. Sir, So why are we adding? 240 by 60. What नहीं sir, को नहीं. Why are we adding the weights? 2580 by 60. हाँ, we have one. Okay, I will tell you, wait, 25 43 into 2580. upon 60, so that is 0 cancel, 6 4s are 24 43. and 6 3s are 18. 43 is the correct answer. Why we are adding up, because हमें क्या करना है, what we have to find out, we need to find out कि how many people will receive a gold piece. समझ में आ गया। So अभी we know that कि ये तीनों gold piece का when we will melt it and when we will make a मतलब we will try to make 1 gold piece of a maximum, मतलब 1 small gold piece of a as heavy as possible. देखो ये तीनों गोल्ड पीस को मिलाकर एक को नहीं देना है, we have to distribute among the number of people. We have to distribute to the number of people. So total gold कितना है मेरे पास, I have the summation of all 3 and maximum heavy possible छोटा सा कितना बन सकता है, that is 60. Yes. तो हम ये तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 60 करेंगे, मतलब मेरे पास 43 गोल्ड बार्स बनेंगे, जिसका वेट कितना होगा, द वेट ऑफ ईच गोल्ड बार विल बी 60 grams and that 60 gram gold piece will be distributed to 43 people. Correct? Understood? Yes. Okay. Anyone has doubt? Next question. 2 buses leave. 2 buses leave Pune from Nagpur. ठीक है,
at the same time. At same time. At 45 kilometer per hour and 60 kilometer per hour respectively. The second bus takes 5.5 hours less than the first bus to complete the journey. Find the distance between Pune and Nagpur. Option A, 900 kilometers. Option B, 990 kilometer. Option C, 1350. And option D, 945 kilometers. Yes, one answer I got. Anyone else? Anyone else? तो यहाँ पर देखो कैसे करेंगे. 2 buses leaves Pune from Nagpur. Leaves to Pune from Nagpur at the same time at 45 kilometer and एक है 45 में और एक 60 किलोमीटर है. मतलब 2 buses है A और B. एक A बस है और एक B बस है. तो स्पीड कितना है 45 किलोमीटर per hour and another one is 60 kilometer per hour. Okay, and what else they are saying? The second bus takes 5.5 hours less than the first bus. But the second bus 5.5 hours less leta hai. Okay, it takes 5.5 hours less. So if I say first bus is taking X hours, then second bus kitna lega? X minus 5.5 hours. Correct or wrong? समझ में आ गया? So if I say first bus कितना ले रहा है? How much is taking? If I say X hours ले रहा है, तो second कितना लेगा हमारा? Second कितना लेगा? X minus 5.5. Understood? यही मतलब है ना क्वेश्चन का. What they are trying to say, the second bus takes 5.5 hours less than the first. If I am taking first bus का time is X, तो second bus का time कितना हो जाएगा? The second bus का time will be X minus 5.5 hours. So this can be written as X minus 5 10 11 upon 2 hours. ठीक है? Now see, one thing is common for both the buses is the distance traveled. Now bus A will travel from Pune to Nagpur and bus B will also cover a distance of Pune to Nagpur. Only what changes is the speed and the time. Now what is so we can say that the distance covered by bus A dA is equal to distance covered by bus B. Correct? Because the distance is same, it's from Pune to Nagpur. So what is the distance covered by bus A dA? How we can find out what is the formula for the distance? Distance is speed into time.
So what is the speed for the bus is 45 into time is x. Correct? And what is the same for the bus B? Speed is 60 and time is x minus 11 by 2. Correct? बस समझ में आ गए? Now we can solve this equation and get the value of x. So that will be your x क्या रहेगा हमारा? Time. And once we get the time, so 45 into time, we'll get the distance. Understood? So this is the 45x. So this is your 45 upon 60 कर सकते हैं हम यहाँ पर, 60 यहाँ पर लेके आ जा सकते हैं. So this is your 2x minus 11 upon 2. Correct? 60 multiply what we got here. So 2x minus 11. So you can cancel this 2 ones are and 2 30 times. And this can be cancelled. Correct? That is 15 2s are 30, 15 3s are. So what I get is here 3x upon 2 is equal to 2x minus 11. Correct? So this can be shifted this side. So this turns out to be 3x is equal to 4x minus 4 into 11 is 44. So this, can you shift this side? 3x minus 4x minus x is equal to minus 44. So x is equal to, sorry, 2 into 11 22 होता है ना? So minus 22. So this is your So this is your 3x is equal to 4x minus 22. So that is your minus x is equal to minus 22. So minus and cancel. So x is equal to 22. Correct? समझ में आ गया? So we got the time, that is 22 hours. So distance is 45 into x. This is the distance. You can substitute here or here, anywhere. So that is 45 into 20. What is the answer? 45 times 2. 45 into 22. कितना आंसर है हमारा? 990. 990. Option. तो 990 किलोमीटर. ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर कितना है? 990 किलोमीटर. Okay. So can you show the previous slide once? This one. Yes, sir. Yes, sir. Done. Done. Okay. Next question number. Question number 4, 5 and 9. 5. Question number 5. If x plus 1 upon x and x minus 1 upon x is equal to 5:3, find x. Okay. Option A, plus minus 1 plus minus 3 0 plus minus 2. Okay. So this is nothing but solution. So this can be done as, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? So if you put 1 here, यहाँ पर हम 1 डालेंगे, so that is your
x upon x square plus 1, correct? So x square plus 1 upon x, and then you have upon x square minus 1 upon x, correct? है ना? Is equal to 5 upon 3. So you can cancel out this. Denominator can be cancelled out. So what remains here is x square plus 1 upon x square minus 1 is equal to 5 upon 3. Correct? So इसे cross multiply करेंगे. So you get 3x square plus 1 is equal to 5x square minus 1. Correct? So that is your 3x square plus 3 is equal to 5x square minus 5. So when you shift the like terms together, so that is your 3 plus 5 is equal to 5x square minus 3x square. Correct? उसे वहां पर shift कर दिया. So that is 8 is equal to 2x square. Correct? So you can cancel out. ये क्या हो जाएगा? 2 1s और 2 4s 8. Correct? ये 2 यहाँ पर divide हो जाएगा ना. So what we get? X square is equal to 4. So x is equal to root of 4. So root of 4 मतलब आंसर क्या हो गया? +2 -2. करेक्ट? रूट ऑफ 4 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो गया +n -2. करेक्ट? सर आपको ऊपर एक्स स्क्वायर कहाँ से? कौन सा x स्क्वायर? Sir, हम ऊपर ये वाला. हाँ अरे यहाँ पर देखो ना, ये 1 और x. सो 1 और x का एलसीएम क्या हो जाएगा? x. हाँ ठीक है, फिर आप क्या करते हो? ये इसको इस, अरे मतलब ये ऐसे ही हो जाता है ना. अभी अगर आपके पास है 1/2 + 1/3, अगर आपको इसे ऐड करना है तो 2 और 3, तो 2 और 3 हैव एन HCF ऑफ 1. तो आप क्या करते हो? इसका एलसीएम नहीं निकालते, हम सीधा 3 1s 2 1s 2 into 3. +2 ऐसे कर लेते हैं ना. इसको हाँ इससे, इसको इससे, इसको इससे. करेक्ट? हाँ ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि 2 और 3 का HCF 1 है. हाँ यहाँ पर जो नंबर था, व्हाट वी वर हैविंग हियर, x और 1. अब x और 1 का HCF क्या हो गया? 1 ही है ना. हाँ x क्या है? तो हम इसको भी ऐसे करें, x into 1 x, हाँ x into x square 1 into 1 1. हाँ ओके थैंक ऐसे यहाँ पर भी किया हमने, and we got that and 5. ठीक. sir, we can do it with a little shorter method also. हाँ, what we can do? नहीं, अभी इतना सारा स्टेप तो लिखने की जरूरत ही नहीं है ना. मतलब we can do mentally also. मतलब what is your way? What do you think? We could just multiply both the sides. This ratio is 5:3, right? So we can Yeah. multiply the left hand side with 5 and this multiply the right hand side with 3, and then we can make an equation with that. हाँ, And then we मतलब can solve anything it. that actually will end up here only ना. After Yeah, doing, sir, you should. We wouldn't have. It wasn't necessary then to write the above thing that x हाँ, square. ये तो बस हमने बताने के लिए लिखा है. बट आप जब सॉल्व करें with 2 answers, so depending upon your level, मतलब you can just skip the steps. There is no need. This is तो ये तो सामने सामने समझ में आता है. ये तो इतना बार तो लिखने की जरूरत भी नहीं है. You can just by saying that you understand this is x square plus 1, this is x square minus 1. तो दोनों डिवीजन होगा और क्रॉस मल्टीप्लाई है 5 और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा. So this you can do orally also. Okay. Okay, sir. ठीक है, that can be done. See, here you don't have to write down the steps. No, you have to just land up with the final correct answer. So whatever the minimum steps are required, you can do. Okay. Okay. Should I change? ये 5 हुआ था ना. ये 3 4. This is 5. We are on 6.
Question 6. Anand 1. Anand 1. 80% of games in 2015 in the year, okay, in year 2016, he played 20% more games than in year 2015. Okay, but one only 60% of games played. Full stop. What was change in percentage? What was change in percentage in number of games he won in 2016 compared to 2015? Option A, down by 20%. Option B, up by 10%. Option C, down by 10%. And option D, down by 8%. ठीक है? आंसर बताओ आप लोग. You can put in the chat box. Which fractions to be excluded?
तो ये वाला आंसर आ गया। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पहले हम ये सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद जिसका हो गया दे कैन गो ओवर दैट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या है, ये सारे फ्रैक्शंस हैं, इसमें से कौन से दो सेट को हमें एक्सक्लूड करना है, सो दैट रिजल्ट इज 1 आफ्टर एडिशन। सम 1 होना चाहिए आफ्टर एक्सक्लूडिंग टू नंबर्स, रैशनल टू फ्रैक्शंस, और क्या एक्सक्लूड करना चाहिए वो ऑप्शंस में दिया है, तो करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या बोल, यहाँ पर व्हाट इज बीन सेड, आनंद won 80% of the game in 2015। ठीक है, ठीक है, I got some answers, okay, ठीक है, we'll see। So first we solve this। अब आनंद won how many games, 80% of a game in 2015। ठीक है, तो अगर हम बोलते हैं कि 2015 में टोटल गेम जो प्ले किया, नंबर ऑफ गेम्स प्लेड इज 100। इफ आई से टोटल नंबर ऑफ गेम्स प्लेड इज 100, सो 1 कितना हुआ एज पर द क्वेश्चन, 80% 1 हुआ, so 80 गेम्स विन किया उसने, करेक्ट। इज इट वेरी क्लियर, ये 2015 का डेटा हो गया। नाउ इन 2016 व्हाट हैपेंड, he played 20% more game than in year 2015। so 2016 में, so 2016 में how many games he has played, total number of played 20% more games, 20% more मतलब 120 games he played, but उसमें से जीता कितना, how many won, only 60%। तो अब 60% of 120 निकाल लीजिए, तो 60% of 120 मतलब 60 upon 100 72 multiply by 120, that is 0 0 plus cancel, 72. sorry, okay, so that is 12 into 6 72। so 2016 में कितना गेम उसने बन किया, only 72 games पर, ठीक है। so now we have been asked what was the change in the percentage of number of game with respect to the 2016 compared to 2015। तो अगर हमें चेंज इन परसेंटेज पता करना है तो हम कैसे पता करेंगे, 2016 में कितना जीता, हाउ मेनी हैज वन 72, एंड 2015 में हाउ मेनी हैज वन 80। तो व्हाट इज द चेंज, so change you have to write down in the numerator, so change is 8 games, change कितना है उसका 8 games upon we have to find with respect to 2015, तो 2015 में कितना जीता है 80 and multiply by 100, so that is 0 0 cancel, 8 8 cancel, that is 10%। so आप देख सकते हैं 2016 में कम है, कम नंबर ऑफ गेम्स है ना, so that is down by 10%। understood? yes or no? अब यहाँ पर कौन सा एक्सक्लूड करना चाहिए, तो वी कैन ट्राई द डिफरेंट ऑप्शंस। अगर हम पहला ऑप्शन में देखते हैं 1/8 और 1/10 को एक्सक्लूड कर देते हैं, तो 2 4 6 12 का एलसीएम कितना होता है, 12 हो जाता है ना। 2 4 6 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, व्हाट विल द एलसीएम ऑफ 2 4 6 12, एलसीएम इज 12। सो यहाँ पर 2 6 12, सो ऊपर 6 आ जाएगा, 4 3 12, तो ऊपर 3 आ जाएगा, 6 2 12, ऊपर 2 आ जाएगा, ये तो ऑलरेडी 12 है तो 1, तो कितना हो गया 6 + 3 9 + 2 11, so that is 12 12 upon by 12, which is equal to 12, so that answer is first one। ठीक है, trial and error method in some questions could take time, so we can directly solve it also. हाँ करेक्ट। So sir, in the exam, should we do the solving method, right? Because trial and method, suppose it was the last option, so it could take a You lot of cannot time. apply the rule for every question, some question by trial and, जैसे this question हमने पहला ऑप्शन ट्राई किया, we got the answer। यहाँ पर हम ट्रायल एंड जल्दी कर सकते हैं, if they are good at taking LCM and adding up the sum, adding up, so we can do trial and, but depends on the question type। so जहाँ पर if we just by analyzing the options, if we come with the answer, we can do trial and error, Because not I first got I added all of them and then saw that what can how be much we could subtract that, how much we could subtract that we could get it to हाँ, 1. that also you can do, correct, that is also not a problem, that also you can do। ठीक है, okay। Question number 8।
1 plus x square and 1 minus x cube equals to 1 minus x to the power 5, 1 plus two mobile phones are sold for rupees 99 each. One on a profit of 10% is made on one, a profit of 10% is made, and on the other, loss of 10%. What is overall profit or loss in transaction? ठीक है? First, no profit or loss. No profit or loss. B, loss of rupees 202. C, loss of rupees 101. And D, profit of rupees 101. Yes, बता. तो ये वाला तो हमारा इजी क्वेश्चन है. You have to just open out the brackets. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? What we can do, 1 plus x square and 1 minus x cube. You can open up the brackets. So 1 into 1 is 1. 1 into x cube is minus x cube. इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है? x square into 1, that is our plus x square, and x square into minus is x to the power 5, and x square into x cube, that is x to the power 5. So which option match is 1 plus x square minus x cube minus x square? So this, correct? Okay. अब यहाँ पर हमें क्या बोला है? Two mobile phones are sold for rupees 9,999 each. On one, a profit of 10% and is made, and on another, the loss of 10% is made. What is the overall profit or loss? Overall profit or loss? क्या हुआ ट्रांजेक्शन? ठीक है? So basically we have been given selling price.
तो सेलिंग प्राइस कितना दिया है 9,999, ठीक है, दोनों फोन का, मतलब ईच फोन। सो व्हेन यू टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सो टोटल सेलिंग प्राइस इज 9,999 प्लस 9,999, दैट इज कितना हो गया 19,998, करेक्ट। टोटल सेलिंग प्राइस इतना हो गया ना, टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 2 फोन्स, दोनों फोन का सेलिंग प्राइस कितना हो गया 19,998। अब आपको ये बात बता देना चाहिए कि वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस। हमें क्या पता करना है, हमें क्या पता करना है, कॉस्ट प्राइस पता करना है। When selling price has been given to us and profit, selling price दिया है और profit, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, what is our formula? The formula will be, बताओ what will be the formula when it has been given? So in this case the formula will be 100 upon 100 minus प्रॉफिट के केस में प्लस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई बाय एसपी। ये फॉर्मूला कब यूज करना है हमें, जब हमें we have been given, we have to find out cost price and we have been given selling price and profit percent। और अगर मान लो कि हमें क्या दिया है, suppose we have been given selling price and loss, so उस केस में cost price का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला रहेगा 100 upon 100 minus loss percent multiply by SP। ये बात समझ में आ गई। कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट के केस में कॉस्ट प्राइस पता करना है विद सेलिंग प्राइस, तो ये फॉर्मूला, और लॉस के केस में हमें कॉस्ट प्राइस पता करना है व्हेन सेलिंग प्राइस वाज गिवन, सो वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। सो सिंपल इसे प्लस लगता है प्रॉफिट में, लॉस में माइनस, लॉस में नुकसान हुआ तो माइनस, प्रॉफिट प्लस है, प्रॉफिट प्लस इनटू सेलिंग प्राइस कर, ठीक है, समझ में आ गया आपको। तो अब अगर उस तरीके से हम करेंगे यहाँ पर, सो व्हाट विल बी आवर कॉस्ट प्राइस, सो कॉस्ट प्राइस फॉर प्रॉफिट के केस में कितना हो जाए, 10% का प्रॉफिट है, so that is your 100 upon 100 plus profit percent is 10%, that is your 110, and multiply by selling price of each mobile phone is 9,999, so ये zero cancel, तो क्या आंसर आएगा बताओ, 11 मंजा, Sir, 990. so that is 990 for this one, correct। अब उसके लिए क्या आंसर आएगा हमारा, इसके लिए हमारा 100 upon 100 minus 1 10, that is 90, multiply by 999, or 9,999, so 0 cancel, so you get 9 ones are 9 and 9 1111. 1 1 1 1, so that is 1 1 1 1 और 0, so total cost, ये cost price 1 हो गया, this is CP1 and this is CP2, so total cost price कितना हो गया तुम्हारा, total cost price 9090 and दूसरा आंसर कितना था, एक तो 9 आंसर, सेकंड वाज 1110, सो टोटल आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारा, ऐड करो, व्हाट इज द आंसर, 20,200. अरे 90,000 कैसे आएगा, 20,000. 20,110. 20,200. 20,200, 20,200 आएगा, ठीक है।
So अब total selling price हमारा कितना था? What was the total selling price? The total selling price was 19,998. 98. And total cost price is this one. So definitely when cost price is higher and selling price is lower, so that means we are in loss. So in that case, CP minus XP. So that is that subtraction of these two is कितने का पड़ा? 202 rupees. So loss of 202 rupees. ठीक है? Question number 10. Evaluate (2.39) whole square, 1.61 whole square upon 2.39 minus 1.6. Option A 0.78, option B 2, option C 6, and option D 4. Yes, anyone else? Four. Yeah. So this is a square minus b square. So that is nothing but a square minus b square is a square minus b square मतलब a plus b and a minus b. So that is 2.39 plus 1.61 a plus b, and you have 2.39 minus a minus b, a plus b, a minus b, correct? और denominator में already we have 2.39 minus 1.61, correct? So ये वाला पूरा cancel हो गया. So the addition of these two is 4. ठीक है? Question number 11. What is the angle between our hand and the minute hand of clock at 6:42. 51 degree, 42 degree, 21 degree, 7.
Okay, anyone else with the answer? तो ये वाला इसके लिए what we can do ना, you can use one small formula. So वो है, the formula is 11 by 2 minutes minus 30 h. ठीक है, इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो विल गेट एन एंगल बिटवीन अ आवर हैंड एंड अ मिनट हैंड. तो हमारे क्वेश्चन में कितना मिनट्स है? 42 मिनट्स है. करेक्ट? हाउ मेनी मिनट्स वी हैव? वी हैव 42 minutes. So that will be your 11 by 2 multiply by minutes कितना है? 42 minus 30 hours is 6. So that is 2 ones are 220. So 21 into 11 कितना होता है? What is 21 into 11? 231. 231. So 231 minus 1. 180. So 51 degrees. Sir, I guess also the mod of it is also used. You can solve it by Sir, there is we have to put the mod also in it, the formula. what you are saying? Mod. Yes, sir. The mod is also put in the formula because if you get any negative, the mod will be हाँ, cancelled. अच्छा, mod you are, हाँ, definitely, हाँ. But the value will be positive only, correct? Yes, sir. हाँ. तो जो भी आएगा पॉजिटिव वैल्यू आएगा, एंगल नेगेटिव नहीं. ठीक है? नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 12. In the figure, in the figure, in the figure given beside, the sum of distance AD and BD is option A, between 10 and 11, 12, between 15 and 16, between 16 and 17. Okay. Arun deposited rupees 6,000
in a bank at 5% per annum simple interest. Varun deposited rupees 5,000 at 8% per annum compound interest after 2 years the difference between their will be option A rupees 235, option B rupees 232, rupees 832, yes, tell me the answer. Okay, anyone else? Anyone else? अभी यहाँ पर हमें क्या बोला है? What we have been said, we have been asked to find out the sum of AD, that is AD. So AD means this line, AD and BD. So BD is this one. BD is this one. We have been asked to find out the sum of these two lines, AD and BD. So we can draw a line from here. This one you can draw. So this value will be 4. ये value 4 होगा. Correct? क्योंकि हमने straight line draw किया है perpendicular. So this will be 4. अब हमें पता करना है, we have to find out. और अगर ये वाला वैल्यू 3 है तो ये वाला वैल्यू भी 3 जैसे होगा ना, करेक्ट? क्योंकि परपेंडिकुलर बन रहा है, ये दो परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली ये वाला वैल्यू भी 3 होना चाहिए, हाँ कि ना? Sir, can we tell how? What? बोलो क्या हुआ? See, this is 3, this whole is 3, and we have drawn a perpendicular from here. Basically, we have dropped a perpendicular from here. So definitely now, if you have this is perpendicular, this is perpendicular. So this is 4, this is 4. So this is 3, so this is 3. This is a rectangle now, na? So this value will be 3. This much. So this value should be 10. Correct? Yes or no? Understood or not? Yeah. Okay. So basically you can, this diagram is not drawn proportionately, but what we can see, if this is 4, and if you drop a perpendicular from here, so this should be 4. And this is 3, so this is also a 3. Correct? So now this is a perpendicular, as we have drawn a perpendicular from here. So what will be the AD by using a Pythagoras theorem? AD will be your, AD is 10 square plus 4 square. So 10 square plus 4 square, that is your 100 plus 16. Correct? So AD square, so AD will be your root of 116. Sir, AD is equal to root 116, which is equal to 10 point something. Because this value will be, because square root of 10 is, so square root of 100 is,
So this way, and next after 10, the next perfect square root we have 121. Correct? It is So that- most probably it's more the root 116 is more than 10.5. So we can just write it 5 plus 10, 15. So we can get the answer between 15 plus and 16. Correct. So now similarly, now we have to find BD. So this is 4, this is 3. So BD is nothing but BD is equal to under root of 4, that is 16 plus 9. And 4 square plus 3 square, that is root of 25. So BD is your 5. So now summation of both, this is something more than 10 and this is already 5 exactly. So 10 plus 50, 10 plus 5 is 15 and this is more than 10. So definitely the answer will lie between 15 and 16. Correct? Correct, because this cannot be 11. Because we have next perfect square root as 121. So this should be ranging between 10 to 11, not 11, between 10 and 11. And this is exactly 5. So the result will be between 15 and 16. Correct? So next question. Next question is Arun deposits rupees 6,000 in a bank for simple interest. So simple interest के लिए क्या हो जाएगा? Simple interest is PRT by 100. That is 6,000 multiplied by 5. PR and T is time for 2 years. So that is 2 upon 100. So the answer for this is 0 zeros cancels. So 6 5s are 30. So 60 into 5, 300. 5 2s are 10. The answer is 600. Correct? The simple interest is your 600. Correct? Now, how to find out the compound interest? So compound interest के लिए हम क्या करेंगे? Compound interest is amount minus principal. Correct? And what is the formula for the amount in case of compound interest? Amount का formula is principal in brackets 1 plus R by 100 raised to the power n minus, sorry, not minus. So amount is principal 1 plus R by 100 raised to the power n. Correct? So principal कितना है हमारा? What is the principal? Is your 5,000. Principal is 5,000. 1 plus rate is 8% upon 100 and raised to the power n. N is 2. Correct? So what we get from here? ये हमारा कितना हो जाएगा? 5,000 108 upon 100 raised to the power 2. Correct? ये हो जाएगा ना 108 upon 100 raised to the power 2. So ये हो जाएगा हमारा Sir, 108 and 100 could be cancelled to 27 by 25. it's 108 multiplied by 108 upon 100 into 100. So the zeros can be cancelled. So 2 0 गया 2 0 गया 1 गया 5 1s are 5 2s are 10. So what remains here is 108 multiplied by 108 upon 2. So 2 1s are 108 into 54. What is the answer for this? Sir, 5832. 5832 minus क्या करना है हमें? Amount minus principal. So principal was rupees 5,000. Correct? So minus 5,000. So that is 832. So we got a compound interest as 832 and simple interest was rupees 600. So the difference between two is 232.
Correct? So that is the correct answer is rupees 230. Okay. Next question. Question number 14. Insert one digit. Insert one digit between 4 and 7. Add another digit between 9 and 8 is the number 4, 7, 3, 5, 9, 8. To make a new number that is divisible by 24. That is divisible by 24. How many such numbers can be made all? नंबर दिख रहा है आपको? So number is 4, 7, 3, 5, 9, 8. Divisible by 24. ठीक है? Made in all. Option A 7, 5, 4, 9. Now, do the digits have to be same? It can be. No, repeat नहीं करेंगे शायद. Repeat नहीं करेंगे. नहीं रख के देखो मतलब कंडीशन तो नहीं दिया क्वेश्चन में कुछ. Insert one digit between 4 and 5 and another digit between 9 and 8 in the number to make a new. So in the question they have not written any there. So you can use same digit because they have not given any condition in the question. So you can use. Okay.
4, 7, 3, 5, 9, 8. So basically we have to insert one number here and another number here, so that the result turns out to be the divisible by 24. Now for that we should know that what is the divisibility test for 24. Divisibility of 24. So divisibility of 24 मतलब क्या हो गया? Divisibility of 24 मतलब the number should be divisible by 8 and 3. If a number is divisible by 8 and 3, that means the number is divisible by 24. ठीक है? So 8 और 3 से अगर कोई number divisible होता है, so that means that number is divisible by 24. तो हमें वो चेक करना है, तो सबसे पहले हाँ अभी 8 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता रहना चाहिए. 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 8 का डिविजिबिलिटी रूल है लास्ट 3 digits should be divisible by 8. So 8 का divisibility rule is last 3 digits should be divisible by 8, and 3 का divisibility rule क्या है? Sum of all digits of given number should be divisible by, ठीक है. अब तो अगर यहाँ पर what all possibilities we can have 0, 1, 2, 3 and 0 to 9. तो अगर हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो 908 divisible by 8 है. 908 है divisible by 8. बोलो yes or no? है कि नहीं? No, sir. नो, तो 0 नहीं हो सकता. 1 रखे तो 918 is 918 is divisible by 8 है. 918 लग रहा है आपको? 8 1 No, 8 sir. नहीं है वो. 928 है. हाँ 928. तो ये नंबर मतलब एक नंबर जो यहाँ पर रह सकता है that is your 2. तो 928 is divisible by 8 है ना. 8 1 8 then 2, 8 1 8 और 48, 8 6 48 हो जाता है. तो 2 हो गया. तो मतलब 0 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 2 हो सकता है. 3 के बारे में 938, नहीं सर. 48, 4, नहीं सर. No. 5, नहीं 958, सर. 968. सो एक हमारा है 928. ओके, और एक 968 हो सकता है. 968 1 2 968 हो रहा है. Yes, sir. हाँ सर. 6 हो रहा है. फिर 978 78 नहीं होगा. 988 और 998 तीनों में से कोई है? नहीं. नहीं, sir. मतलब हमारे पास ये 8 के divisibility rule को मतलब what numbers is satisfying the divisibility rule for 8 is 2 and 6. So that means our number can be, अब जो हमारा नंबर होगा, हमारा नंबर क्या हो सकता है? हमारा नंबर हो सकता है 4-7 3 5 9 और यहाँ पर 2 हो सकता है 8. करेक्ट. दिस इज वन नंबर. एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है और एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? एक तो 2 हो सकता है और एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? 4-7 3 5 9 and 6. करेक्ट. बिकॉज ये दोनों नंबर डिविजिबल बाय 8 है. अब यहाँ पर हम अभी हमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल, वी नो दैट द सम ऑफ all the digits should be divisible by 3. So what is the addition of 4 plus 7 plus 3 plus 5 plus 9 plus 8? So अगर हम
कितना आ रहा है 4 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 8 कितना आंसर आ रहा है कितना आ रहा है 4 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 8 38 36 38 आ रहा है 36 11 हाँ 11 प्लस 3 14 14 प्लस 5 19 19 प्लस 9 is 28 and 28 plus 8 is 36 तो 36 आ रहा है और 36 में हम क्या ऐड कर देंगे प्लस 2 तो कितना हो रहा है हमारा 38 8 करेक्ट अब नाउ 38 अभी हम देख सकते हैं 38 नाउ व्हाट वी कैन सी 38 में अगर हम इफ आई एम पुटिंग 0 हियर प्लस 0 तो 0 यहाँ पर अगर हमने 0 डाला तो 38 प्लस 0 तो 38 प्लस 0 वो डिविजिबल बाय 3 नहीं हो सकता 38 प्लस 1 हो सकता है हो सकता है मतलब यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी बन सकती है प्लस 2 करोगे तो 40 नहीं बनता है प्लस 3 करोगे तो 40 +4 प्लस 4 है प्लस 4 करोगे तो कितना होगा 42 दूसरा नंबर होगा 4 प्लस 5 पे नो सर प्लस 6 पे +7 पे प्लस 7 Plus 38 प्लस 7 45 होता है तो प्लस 7 तो 7 एक पॉसिबल और फिर 8 9 नहीं 8 सर और 9 नहीं होता है मतलब नहीं ये हमारे यहाँ पर कितने नंबर बन गए 3 नंबर यहाँ पर बन रहे हैं 4 1 7 3 5 9 2 8 4 4 7 3 5 9 2 8 and 4 7 7 3 5 9 2 8 अब यहाँ पर देखते हैं we know the sum of this is 36 तो 36 में हमने क्या ऐड कर दिया 36 प्लस 6 8 हाँ 36 प्लस 8 6 करेक्ट अच्छा 8 तो पहले से था बराबर 36 तो कितना हो रहा है तुम्हारा 42 42 अब यहाँ पर 42 में if I am adding up a 0 so that is divisible by 3 यस तो मतलब यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी 0 की बनती है 36 प्लस हमारा एक नंबर 6 that is 42 so 42 प्लस 0 हो रहा है 43 नहीं होगा 44 नहीं होगा 44 नहीं 44 एंड 45 होगा फिर तो 45 किस पे आ रहा है हमारा 42 प्लस 3 तो एक नंबर 3 हो सकता है करेक्ट yes और नो यस सर उसके बाद 4 पे होगा 42 प्लस 4 नहीं होगा नो 5 पे भी नहीं होगा 6 पे होगा 6 पे होगा तो 48 बन रहा है तो 6 पे होगा और 7 पे 49 नहीं हो रहा है 8 पे 50 हो रहा है और 9 पे 51 होगा सो 9 भी होता है तो 9 मतलब ये वाले ब्लैंक में 0 3 6 9 आ सकता है सो मतलब यहाँ पर 4 नंबर फॉर्म हो रहा है हमारा विच इज सैटिस्फाइंग बोथ द कंडीशंस और यहाँ पर 3 नंबर्स हो रहा है विच इज सैटिस्फाइंग बोथ द कंडीशंस सो वी हैव टोटल 7 ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 15 दिया हुआ है दिस इज बीन गिवन एज 15 A H 12 दिया हुआ है दिस इज अ B सर लास्ट वाले का आंसर क्या था? लास्ट वाले का 7 ना 7 नंबर बनते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर ठीक है सर। ठीक A B C and this is your D करेक्ट हमें पता है क्या करना है फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल BD
BD का लेंथ पता कर लें. So sir, this figure is a parallelogram. Yeah, correct. It is been given as a parallelogram. तो given दिया है ABCD is a parallelogram. Option is 9, 13, 10, 11. Sir, I have written my answer in the chat box. Okay, ठीक. Okay, very good. So now how to find out this? We have to find out the length of this diagonal. So हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं? ये perpendicular triangle बन रहा है, right angle triangle, so you can find out this value. So this value is nothing but AH. So AH will be your. So AH कैसे मिलेगा हमको? AH will be your AH square is equal to hypotenuse is this one opposite to the perpendicular, so that is AB minus BH. Correct? AB minus BH square. So that is 15 square minus 12. So 15 is 225 minus 225 minus 144. So AH कितना आ रहा है आपका? Root of कितना आ रहा है? 81. 81. That is 9. so AH is 9. 9. So you got this value as 9. Now this is a parallelogram, the opposite sides are equal. So 14 and 9 1. So this is your 6. Correct? So now again you can apply Pythagoras and BHD. So that is 12 square plus 6 square. 144 plus 36. कितना होता है? सर 6 कहाँ से आ गया उसमें? अरे सॉरी 9 14 minus 9 is 5 हो जाता है ना, सॉरी. हाँ बराबर. Sir, If 5 होगा. 1 बराबर. हाँ क्योंकि ये 14 minus minus 5. हाँ बराबर, correct. So this is your 14 minus 9. So this is your 5. So correct. तो ये हमारा inside AHD BHD में if you apply Pythagoras theorem, so BD क्या हो जाएगा तुम्हारा? So BD square is equal to 12 square plus 5 square. That is 144 plus 25. That is 169. So BD is root of 169, which is nothing but 30. Okay. The correct answer is 30. Okay, next one. When the decimal point of a certain positive decimal number is moved four places to the right, the
new number is 4 times the reciprocal of the original number. What is the number? What is the original number? मतलब? What is the original number? Option A 0.2, option B 0.02, option C, option D, आया किसी का आंसर ये वाला 16th वाला? Okay, I got one answer. Let's see. Okay, very good. I'm getting answers. We'll solve it now. तो यहाँ पर क्या बोला है? When a decimal point of a certain positive decimal number is moved 4 places to the right. तो जब नंबर को 4 places to the right करते हैं, so we if I say, अगर हम बोलते हैं if I say number is x, if I say number is x, so when you shift the decimal places 4 times 4 places to the right, so that means you have to multiply it by 10 to the power 4. करेक्ट? समझ में आया कि नहीं आया? अगर एक नंबर है और उसके डेसिमल प्लेसेस को if I want to shift 4 places to the right, so that means I have to multiply by 10 to the power 4. करेक्ट? सर -4 नो? नो, -4 में लेफ्ट में जाएगा ना, -4 करोगे तो लेफ्ट में चले जाएगा, समझे? +4 करोगे तो राइट में जाएगा डेसिमल प्लेस. ठीक है. ठीक है? तो अब ऐसा करने पे होता क्या? व्हाट हैपेंस व्हेन यू डू लाइक दिस? ऐसे करने पे होता क्या है? क्या होता है ऐसे करने पे? मूव 4 प्लेसेस टू द राइट, द न्यू नंबर इज 4 टाइम द रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल नंबर. सो जो न्यू नंबर बन रहा है, तो न्यू नंबर जो बन रहा है वो क्या बनेगा? तो ये न्यू नंबर तो यही है, x into 10 to the power 4. ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी 4 टाइम्स द रेसिप्रोकल ऑफ द ओरिजिनल नंबर. समझे? तो ये कितना हो गया तुम्हारा? 10,000x is equal to 4/x. सो आपको ओरिजिनल नंबर मतलब ओरिजिनल नंबर हमारा क्या है? x. तो हमें ओरिजिनल नंबर पता करना है, so that is क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, that x square is equal to 4. So x square is equal to 4/1, 2, 3, 4. correct? x is equal to root of 4/, तो 4 का 2 होता है और 10,000 का 100 है ना. इवन नंबर ऑफ जीरोस है, सो 2 ही 0 आएगा, दैट इज 0.0. सो आवर करेक्ट आंसर इज B. ठीक है सर 10⁴ राइट में जाएंगे, मतलब डेसिमल पॉइंट शिफ्ट देखो अब ये 2 है तो डेसिमल किधर है? जब हम बोलते हैं इफ अ नंबर इज 2, सो व्हाट डू मीन बाय दैट इज 2.0 ना. यस. These are decimal numbers ना, we are dealing with decimal numbers, we don't put a decimal. Yes, sir. तो अब Yes, इस sir. राइट में डेसिमल को शिफ्ट करना है तो 10 to the power 4 में करोगे, माइनस हो जाएगा तो पीछे चले जाएगा, लेफ्ट में चले जाएगा वो, है ना.
ठीक है? सर पर अगर हमारे पास नंबर है 16.25 इंटू, हाँ। तो हम लोग उसको 10⁻², मतलब इंटू 100 करेंगे तो 1625 बन जाएगा ना, तो हाँ, लेफ्ट में गया। हाँ, तो 1625 राइट में गया ना, ये राइट है ना तुम्हारा? नहीं 162, सर, अगर हमारे पास एक डेसिमल नंबर है 16.25 हाँ, और हम 16.25, 0.25 और हाँ, उसको हमने 10⁻² से मल्टीप्लाई किया, मतलब 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा? तो सर हाँ राइट में जाएगा। उधर जाएगा ना, तो हाँ ये 625 हो जाएगा ना, ओके। पॉइंट ले लो, ऐसा होगा ना? हाँ सर। ठीक, हाँ ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन we'll do, then stop for the day. Question number 17. The sum of three numbers is 20. Okay. The first is 4 times the sum of other two, and the second is 7 times the third. What is the product of all three numbers? Option A 400, option B 40, option C 100, option D 28. Okay, very good. I got one answer. Okay. Anyone else with the answer? Okay. ठीक है, very good. So यहाँ पर हम इसको कैसे कर सकते हैं? How we can do this? So the sum of three numbers is 20. So if I take three numbers as x plus y plus z, that is 20. Okay. So the first number is x. The first number is x. Okay. X is equal to 4 times the sum of other two. 4 times the sum of other two. Other two is y plus z. So basically y plus z क्या हो गया मेरा? Y plus z is x upon 4. So I can substitute here y plus z के बदले. So y plus z के बदले I will write down x upon x plus 4. Instead of y plus z, what I wrote? X by 4. So that is nothing but 20. So this is your 4x plus x is equal to 80 लिखते हैं 4 into 20. So there is your 5x is equal to 80 है ना, ये 4 या मल्टीप्लाई होगा 4x, यहाँ पर एलसीएम ले लिया हमने 4x plus x and 4 हम मल्टीप्लाई. So that is 5x is equal to 80. So x is equal to 80 by 5, that is 60. So we got the value of x. So we got one number as 16. Okay, now what is second number is? Second number is matlab the second number is that is y. So y is equal to 7 times the third. Y is 7 times the, that is 7z. Correct? Now we know that
x पता है हमें, x क्या है, हमें x का वैल्यू क्या है 16, so हम ऐसे लिख सकते हैं 16 इज इक्वल टू, है ना, x के बदले हम 16 लिख सकते हैं, करेक्ट और नॉट? 60 अपॉन 4 इज इक्वेशन x by 4, 16 अपॉन 4 इज इक्वल टू y प्लस z, तो y के बदले हम 7z लिख सकते हैं, 7z plus z, correct? Instead of y, I wrote 7z. So this is the 4 ones are 4, 4 fours are 16. So ये क्या हुआ? 4 is equal to 8z. So यहाँ से हमारा z का वैल्यू क्या आ गया? Z is equal to 4 upon 8. So that is 0.5. Sir, Z is equal to 0.5. So I got this value as 0.5. और remember the y is equal to 7 into z. तो 7 into z मतलब 3.5. So ये वाला वैल्यू कितना हो गया? 3.5. So 3 नंबर ये हो गए, तीनों को मल्टीप्लाई करो कितना हो रहा है? 16 into 0.5 is 8. 8 into 3.5 is 28. 28. So 8 into 3.5 is 28. ठीक? Okay? This is the answer. ठीक है? Okay. ठीक है, we'll stop.